So I'm starting the session, and this is okay. So this is Intelligence Bureau Security Assistant Interview batch, and the batch number 4 is here. This is actually the bilingual batch. I don't know the numbers of students who are interested to join this batch from bilingual background or from English background. But yes, this batch will go for both the persons, English as well as bilingual. Why this is called English? Why this is called bilingual as well? Because whatever I teach you through my speaking must be English and Hindi. जो भी मैं बोलूंगा यहाँ से वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोला जाएगा. But whatever you will be given as a part of resource, study material or PDF, they all must be in English. So that's why this batch can go with both the candidates, English medium and bilingual medium. So we will be covering 10 major important topics for interview. And for these 10 topics, I will be taking 10 sessions. There may be plus minus of 2 sessions, not minus, but plus of 2 sessions if necessary. Otherwise, 10 sessions are very, very sufficient. All the PDFs must be given in the batch. Some special session of other paid batches from complete background. You will given the access of those things. Yes, we will be working on the psychology of the interviewer, and I will explain each and every reason why any question is asked and what is the probable OLQ behind that. कोई भी सवाल क्यों पूछा जा रहा है और उसके पीछे की साइकी आपके पास क्या रहती है. साथ ही साथ लाइन ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आइडिया ऑफ रैपिड फायर क्या रहेगा, एंड क्लास इंटरेक्शन क्या रहेगा. और हमारी सारी की सारी क्लास ऑडियो वीडियो क्लास होती है, जहाँ पे आप अपने आप को ऑडियो से अनम्यूट करके और वीडियो से ओपन करके मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो जब चाहें तब. ठीक है. ओके. इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी पार्ट ऑफ डिटेलिंग? Now, there is something about us. So we have a legacy of more than 1,000 selections from the past years in IB and RO. Recently in a RO examination for GD post, scale 7, we have taught 7 students and all 7 have been selected. The result for RO Tech is yet awaited, and yes, we are hopeful to have all our 10 candidates to be selected this time. Now we have experience of more than 11 years. You can find me online here and at this WISE app, and also you can access me offline in Mukherjee Nagar as well as Karol Bagh in Delhi. I have a lucid approach to make the students comfortable while being taught or while he is in my horizon. So this is what for my introduction. Now, what are those 10 topics we will cover in that thing? So the first thing is the questions about yourself. Question about yourself is tell me something about you, or tell me something about your family. Tell me something about your friends. Tell me something about your enemies. Okay, everything something which is around you must be asked here. Then question about the job position. You are preparing for IB. So the introduction of IB. What are the qualities which are important to join any IB position? And you are working hard to join the position for security assistant. So what is required to be a security assistant in IB? IB के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी रहती है, वो चीजें आपको यहाँ से जाननी जरूरी है. साथ ही साथ जो भी आपके स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में मेजर सक्सेस या मेजर फेलियर या कोई गैप ईयर रहा है, then we will cover those questions over that, and we will make the sample answer which is perfectly possible for an IPS officer who can be impressed after listening to you. Then we will take care of some of the strength and weakness
and this question is very, very important. How strength could not be spoken in a way that it should not be like overpraising yourself. And yes, you have to learn one tact or skill. How can you turn your weakness into your positive one or the strength? And it is the main game changer or the role changer. So you have to take care of this. And I will provide a long session for this strength and weakness. Then the question asked about the hobbies. Question asked about hobbies, how to select your hobbies and related questions. So I don't know whatever your hobby is. Kindly please tell me in the chat box what your hobby is or what your hobbies are. So आप अपनी हॉबीज में क्या लिखते हैं? क्या आपकी हॉबीज बताने लायक हॉबीज है या नहीं बताने लायक है? इज इट वर्थ मेंशनिंग और नॉट वर्थ मेंशनिंग? और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर जिस भी सिटी या जिस भी स्टेट से आप हैं उसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं जो बेस्ड अपॉन योर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ योर सिटी या स्टेट से बनते हैं, और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन के तौर पर घूमना फिरना पड़ेगा। ये सेशंस अपने आप में बड़े लंबे तगड़े सेशन होने हैं। आप ये मत मानिएगा कि सिर्फ इस हेडिंग के ऊपर काम करेंगे। हेडिंग के अंदर कम से कम 10 तरह के सवाल बनेंगे जो इसके अंदर हो सकता है। राज्यवर्धन इज सेइंग अपसाइक्लिंग एंड एक्वापॉनिक्स, यस बोथ आर करेक्ट। शिवम कह रहे हैं स्पोर्ट्स हो सकता है हॉबी में, बिल्कुल सही है। शायरी लिखना पसंद है, बिल्कुल ठीक है। नाउ ग्रेजुएशन और एकेडमिक्स अगर आपने कुछ कर रखा है तो उसकी नॉलेज चेक की जाएगी, और उसकी नॉलेज चेक करने के लिए क्या आपको पूरी ग्रेजुएशन को फिर से याद करना जरूरी है या उसको एक बार रिवाइज करने के लिए टू सम एक्सटेंट आपको कुछ शॉर्टकट्स निकालने जरूरी है। साथ ही साथ आपको कुछ एनालिटिकल और हाइपोथेटिकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि सिचुएशनल क्वेश्चन के तौर पर पिछले सालों में पूछे गए हैं, और उसी पिछले सालों में पूछे गए सवालों के आधार पर हम कुछ पास्ट ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की हैं, जिनके बेस पे हम देखेंगे कि कैसे रैपिड फायर क्वेश्चंस अलग अलग एसआईबी में पूछे गए हैं और कैसे दिक्कत का सामना नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्क एथिक्स पूछे जाएंगे। इसका मतलब है अगर आपको किसी तरह का वर्क दिया जाता है और अगर आपके सीनियर उसको मना करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सोर्स के द्वारा दी गई है, तो ऐसे में आप अपने सीनियर को फॉलो करेंगे या अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे, या वर्क एथिक्स के तौर पर कई बार आपकी किसी से झगड़ा या लड़ाई हो जाती है, आप इरिटेशन हो जाती है, तो इरिटेशन को खुद को काबू में लाने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप किस तरीके से, व्हाट आर द वेज टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द इरिटेटिंग पोजीशन। तो इस तरह के सवालों को जब हम देखते हैं तो कम से कम 10-20 सवाल इसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। सर मीडियम ऑफ द क्लास विल बी इंग्लिश। This batch is, again I must tell you that the medium of the class must be bilingual. Bilingual in the sense that I will be talking both in English and Hindi language, and yes, PDF and the study material provided solely in English. The class medium will be how I'm like, how I am speaking. This is the same, you will get the essence in the batch itself. Now, is there any problem about the 10 topics we are going to take? So these are 10 topics, 10 talks, and 10 sessions must be there. So they are, each session must be of 1.5 hour session, or it must stretch up to 2 hours. And sometimes we will be taking some special sessions of some particular session on Saturday or Sunday also. And you will again be invited on all those sessions, especially. From now on, the sessions will not be free frequently on the public channel. We will be providing everything in our paid channels only. So please keep commenting in the chat box so that I will be giving all the questions and answers. So this is batch 4 for Swift batch, and this batch will be bilingual as well as English medium batch. We'll be taking care of both the students. And this is presumably the demo session of the batch. So if you want to take admission, then it must be taken as a demo. So there must be 10 sessions, 10 talks,
I will increase it up to 2 sessions if I need so. The price of the batch is 599 for first 50 students, and after 50 students, the price will not be risen, but we will stop taking the admission. Admissions open on 17th of July, means today, and by today itself, you will get the link. You will get the link and student ID. You will get the link and student ID. If you send your name, your SIB, your roll number, your contact number, your WhatsApp number, your marks in prelims, experience in tier 2, hobbies, graduation, and extra skill set. So if you send me all such things, then I will give you, and you have to send everything here on my email ID, where in the subject you have to write Swift batch, and in the particulars or in description, you have to write everything related to name and SIB, and you have to send this mail to beat interview, BEAT interview @gmail.com. The timing of the batch is 9 a.m. in the morning, and this batch will go from Monday to Friday. There will be no mock interview in this batch. Only class interactions must be there. We have made this batch only for those students who want the guidance from me and those who want the cost effective batch. So this is something, the cost effective batch for all of you. You will get the essence of everything through me. And I promise you everyone that even after completing the whole batch, if you feel that you are not satisfied with the batch, then I will fully refund the money without asking anything. First thing. Second thing, you have to be disciplined. You have to come live each day. You don't have to be dependent on recording. If you are live, then I am 100% sure that no one can stop your selection from this batch. What is the difference between other batch and this batch? Other batches are full batches where we discuss each and everything related to current affairs, security topics, and all such topics which are pertinent and relevant for interviews. And also we take 2 mock tests also, and in those batches we have ample of students who want to discuss something, so the classes are going in a lengthy manner. That is why we have a very high level of consumption of our bandwidth, and that makes our price or fee level high for such batches. But for this batch, particularly for Swift batch, we have kept the fee as low as possible. This is 599 only for just 50 students. And yes, this will be the beneficial batch for everyone who want the cost effective batch, but guidance with me. Okay, so this is all from my side. So is there any concern related to this batch? Then please ask me. The batch will start from 19th July 2023. You can take the admission today or tomorrow. I will give the link in the chat box or the comment box if you want. Okay, so those who want the link, please tell me in the chat box. So how many of you seem interested and how many of you are not? Then please tell me. If there is any concern, then please tell me. So Premananda and Niranjan is saying link send kijiye.
So this is the link given in the Zoom chat box. And I can give you one more thing, the student ID here. Should I give you the student ID? Okay, just mail me first. I will send you the student ID whenever you mail. How you have to mail me? Just I have demonstrated it now. You have to send your name, SIB, roll number, contact number, WhatsApp number, marks in prelims, experience in tier 2, hobbies, graduation and extra skill set to my official email ID, beatinterview@gmail.com, and you have to write the subject Swift batch. Okay. Do you want to ask any question? You can unmute yourself. If you want to unmute yourself, then you can, or otherwise you can ask me anything. Sir, like what is the process? We have to just pay, then automatically we will get a student ID and password. No, Shivam, through this email ID, no. By sending the mail over the email ID, I will give you one link and student IDs. You have to download the app, insert the email ID, then you will get the payment option. Or you can directly have the payment option. After then you have to fill the student ID. By both the ways, you can get the class accessed, and thereafter you can get everything whichever there in the class. Okay. Any other thing to ask? Please ask. So Ayush Mehra is saying interested. Okay. Anything ask? Okay. So this is just the, I can see Premananda, Maheshwara, Niranjan. So if you want to ask anything, then please unmute yourself. I have allowed you. You can unmute yourself now. Hello, hello. Okay, so this is Hello, for sir. hello, hello, hello. Hello, sir. Yeah, भावेश here. yeah, Bhavesh. सर हमें अगर जैसे आज 19 तारीख को मेरा एग्जाम है, अगर एग्जाम देना हो या फिर अगर हम अटेंड नहीं कर पाए क्लास तो Then this session will be on recorded, and you can get the recording from the resource option in the app. In the resource Okay. option, there will be two things. One, PDFs are there, and second, all the recordings of the classes are there. And you Okay, can okay. access Thank you, the recording for n number of times. Okay. But don't get dependent on recordings, because you can have the real essence while interacting with me, isn't it? Yes, sir. But in case Yes, suppose yes, we have a yes, problem. yes. It must be in the emergency case only. Yes, sir. Okay, fine. Thank you, sir. Okay, okay, Bhavesh. Krishna Priya is saying, sir, is there any upcoming evening batch? We will be launching an evening batch, the complete evening batch. Sir, course ID चाह रहा है payment के time. Okay, I will send the payment ID or course ID in the mail ID. So Premananda, do mail me please. Okay. Hello, sir. Hello, hello, ma'am. Hello. Suchitra here. Suchitra from Maharashtra. Yes, sir. Yeah, please. सर मुझे वो इंटरव्यू वाले बैच के बारे में पूछना था. तो आपकी स्टार्ट हो गई? हाँ, मॉक Only इंटरव्यू. interview. नहीं, जो कल आपने टॉपिक भी डिस्कस किए थे, मणिपुर साइड वाला, मतलब वो जो करंट अफेयर्स और वो वाली जो बैच है ना, वो तो एक उसमें स्पेशल सेशन था. वो संडे को अच्छा, हम क्या करते हैं, स्पेशल सेशन लेते हैं सब बच्चों का. तो इंटरव्यू बैच में, मॉक इंटरव्यू जिसमें आप लेंगे जिस बैच में, उनका उसका कंटेंट क्या होगा? उसका मुझे कंटेंट वो पहले तो यही होगा जो यहाँ पे बताया है. फर्स्ट कंटेंट तो यही होता है, ये ओके. वाला जो सामने लिखा हुआ है. उसके साथ साथ उसके अंदर करंट अफेयर डिस्कस होती है. तो शायद हाँ आप उसी बैच की बात कर रहे हैं ना? हाँ, यस हाँ, में. ठीक है. तो उसके लिए मेरे पास डार्क हॉर्स बैच है, जिसकी लगभग सीटें खत्म हो चुकी हैं, जिसमें ओके. मैंने लिमिटेड सीट से भी 10 ज्यादा एडमिशन हो गए. तो या तो आप मेरे को एक बार मेल कर देना, अगर मेरे पास सीटें होंगी तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा. अदरवाइज आपको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 10 दिन का, तो नया बैच आएगा.
ठीक है, ओके ठीक है, तो एक बार चलेगा आप सर। मेल भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा, पूछ लूंगा मैं टेक्निकल टीम से कि एक दो सीट खाली है तो बता देंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है, चलेगा सर। ठीक है, क्योंकि थैंक क्या यू। होता है, हम लोग एक्स्ट्रा एडमिशन ले लेते हैं, तो एक्स्ट्रा बच्चे जब लाइव आ जाते हैं तो प्रेशर ऑन द ऐप विल इंक्रीज, और उससे फिर बच्चों की, क्योंकि क्लासेस लाइव चल रही हैं, तो बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होती है। ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि यस। यहाँ पर बात इस बात पे नहीं है कि मैं एक पॉसिटिव क्रिएट कर रहा हूँ, बात इस बात पे है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ओके। ठीक है, तो इस वजह से तो एक, मुझे लगता है कि उस बैच में लगभग 50 अगर एडमिशन है तो 40 बच्चे लाइव आते हैं डेली। ओके। और अगर 40 बच्चे लाइव आते हैं तो इसका मतलब है ज्यादातर लेवल पर थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है चीज। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, फिर भी आप एक बार मेल करना, आई विल डू समथिंग पॉजिटिवली। ओके। ओके ठीक है, एक्चुअली ओके। मैंने मेल किया था, आपने मुझे वही वाली बैच का रिप्लाई भी दिया था, बट ड्यू टू सम रीजन मैंने पेमेंट ही नहीं किया। नहीं, तो क्योंकि मैं अभी मेरे पास जो टाइम स्लॉट है ना मैम, हाँ। अभी मैं 8 आवर्स मेरा लॉक हो रखा है आईबी के पे, उसमें 8 आवर्स, और बाकी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो अभी मेरे ओके पास टाइम उतना है नहीं, तो इस वजह से मैं अभी 10 या 15 दिन लूंगा कंप्लीट नेक्स्ट बैच चलाने में। ठीक है। ठीक है, चलेगा ओके, सर। थैंक यू। आज शाम तक ईमेल करता हूँ सर, सीजीएल है आज, सीजीएल देकर बाद में मेल करता हूँ। अरे प्रेमानंदा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्सन? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी टॉट नाउ? कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे? और आपको मैं आज एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, शुड आई? यस और नो? सो इफ यू वांट टू ज्वाइन आईबी, अगर आपको आईबी को ज्वाइन करना है तो देखो, हम एक बेसिक बात करते हैं कि अपने को क्या क्या चाहिए। तो एन इंटेलिजेंस ऑफिसर मस्ट हैव सर्टेन नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। उसके अंदर कुछ नॉलेज, कुछ स्किल और कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, और वो आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग टाइम और बिफोर योर ज्वाइनिंग, आपको ये चीजें अपने अंदर इनकलकेट कर लेनी चाहिए। How you can inculcate? By gaining the knowledge related to basic understanding of the use of intelligence and evidence by law enforcement agencies, having the knowledge of relevant legislation and laws and its impact on the role and agency activity. You must know the knowledge of intelligence collection methods and techniques, and also you must be having good understanding of information management and data integrity issues. And through this part, the interviewer may ask you that, have you ever gathered any information from your friend or some unknown person? If yes, then tell me the instance. So who want to give me the answer? The second one is, what are the skills do you have? Do you know this information technology skills including MS Office application? Or do you have some research skills, data interpretation skills, problem solving skills, risk management skills? Or you must be having some skills related to writing, drafting, or presentation skills, because as a security assistant, you must be knowing all such things. Because if you are not doing any particular field job, then you have to make the draft of what you have gathered in the field. And also you must have some experience, like research and gather information from a wide range of sources to assess information, conducting analysis and presenting results, evaluating information to determine its utility and application, and planning and managing on workload. And also you must know to work in the tight deadlines. So have you ever worked in the tight deadlines?
इस स्लाइड से पहले की स्लाइड दिखाओ। इस स्लाइड से पहले मैंने कोई स्लाइड नहीं दिखाई, इससे पहले मैंने बस बैच को इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए, सो इस चीज के लिए अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे, अपने OLQ को, ऑफिसर लाइक क्वालिटी को सेट करेंगे, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और we will start the batch from 19 at 9 a.m. in the morning. So this batch will be of 60 minutes to 120 minutes according to the topic. And we will cover 10 topics, 10 sessions, all PDF special sessions, everything. I must show you that sheet again. जो आप पूछ रहे हो, यही शीट पूछ रहे थे ना आप, मोहिनी? Okay. So what should be the 10 topics we will cover? Questions about yourself, all the questions about job position, all the questions about accomplishment, failures and gap years, all the questions related to strength and weaknesses, all the questions related to how to select your hobbies and related questions, all the questions related to your city, state, all the questions related to your graduation or academic knowledge, and I will suggest you some shortcuts. Also, I will tell you most important question related to analytical and hypothetical interview based questions. Some case studies must be there for your rapid fire questions and work ethics based questions also. Okay, so this is, and also you must be the member of our premium Telegram group for this batch, and you must be invited each time for live discussion of current topic and internal security whenever there is a group discussion. Okay, group discussion. Unless or otherwise, we will call you in our subsequent batches only in the paid batch. Okay. So there will be no mock interviews in this batch. So you cannot expect that. And yes, I'm telling you that thing very frankly and straightforwardly. So I think you may not be having any further question regarding this. So if there is any, then please ask me. Otherwise, I will send you the link or okay. One more time, I should send you the link here in the comment box or the chat box. So you can join the Telegram. Sorry, you can join the batch through that link only. If you want the full detail of the batch, then you must send the basic inquiry and I will send you the link and student ID with the app. Okay, so this is all from my side. Thank you so much, guys, for joining us.